Namaste everyone. A very good evening to all of you. I'm a Roshni Rote from Aarambh Yoga Institute and I will be your host for today's session. Let me introduce you to myself. I'm a Yoga Wellness Instructor YCB Level 2 and currently pursuing my Yoga Master Level 4 certification from Aarambh Yoga Institute. Today I'm excited to welcome you all to the day 1 of Thyroid Harmony, which will be led by my talented co-host Renu Mehta. Now, first, I will introduce Aarambh Yoga Institute. Aarambh Yoga Institute, located in Kandivali, Mumbai, is an ISO certified institution that follows international standards for quality management. We are accredited by the Yoga Certification Board YCB under Ayush, Government of India. And we operate as an educational branch of the Aarambh Yoga Foundation, a public charitable trust registered under the Bombay Charitable Trust Act. Aarambh Yoga Institute is a well-trusted yoga institute in Mumbai, India. We aim to enlighten the world, especially young aspirants, by providing high-quality education, training, and guidance in the yoga teaching profession. We help them discover the true essence of yoga and its benefits by applying yogic principles and practices in daily life. This leads to better balance in various aspects of life, ultimately creating a more positive and harmonious society. Now, I will introduce our Guru Dr. Sushma Maurya, who is founder and director of Aarambh Yoga Institute. She has an extensive 2 decades of experience in teaching and learning yoga. She serves as the lead examiner for the Yoga Certification Board Ayush and is currently an assistant professor at Swananda Yoga Vidya Gurukul Latur. Dr. Maurya has co-compiled the Yoga Teacher and Evaluator YCB Level 3 and Yoga Master YCB Level 4 textbook, contributing significantly to the academic field of yoga. She is UGC NET qualified in yoga and holds a master degree in yoga, along with postgraduate diploma in yogic science and Sankhya Yoga Darshan. She is certified at Ayush Level 2 and 3, achieving the prestigious Yoga Master Level 4 qualification. Beyond yoga, Dr. Maurya has also earned a diploma and master degree in education. Also, she is black belt in karate. Her achievements have been recognized with the Yogashri Award by the Indian Yoga Olympian Federation and the Patanjali College of Yoga and Research Center. She collaborates with renowned institutes, corporates, schools, NGOs, gymkhanas, and the clubs, spreading her expertise and passion for yoga across diverse platforms. We feel privileged to embark on our yoga journey under the guidance of our Guru, Dr. Sushma Maurya. So, this is all about Aarambh Yoga Institute and Dr. Sushma Maurya ma'am. Let me introduce Renu Mehta, who will be presenting today's session as part of the 5-day Thyroid Wellness Workshop. Renu is a Yoga Wellness Instructor YCB Level 2 and is currently pursuing her Yoga Master Level 4 certification from Aarambh Yoga Institute. She holds a BSc in IT and MBA along with certification in project management, a diploma in software engineering, and various other professional certifications. With over 20 years of experience in the IT industry, Renu has successfully led projects, optimized IT systems, and streamlined processes to deliver efficient solutions, making her a seasoned professional who seamlessly bridges innovation with strategy. Beyond her professional career, Renu is actively involved in volunteering is a part of global institutes that aim to empower individuals, foster leadership, and encourage personal and professional growth. Let's welcome Renu Mehta, whose dedication to learning, wellness, and empowerment serves as an inspiration to many. Thank you. Over to you, Renuji. Thank you so much for this lovely introduction, Roshni ji. Okay, Thank you. yeah, let me quickly share my screen. Let me know if you're able to see my screen. Okay, my screen is visible to everyone. Yeah, yes, Oh, Renuji. okay, okay, great. Let's start.
So again, I welcome you all. Namaste, good evening to all of you. So I welcome you to my next session, Thyroid Harmony, 5 days of yoga recovery. Okay. Let's start with a prayer. Close your eyes. We'll start do three omkaras and then followed by a prayer. Deep inhale. Om. One more time. Deep inhale. Om. One more time. Last time. Deep inhale. Om. Join your hands in Namaste. Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Vargo Devasya Dhimahi धियो यो न प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Rub your palms upon your eyes. Gently pour down and open your eyes. So once again, namaste to everyone. Let's start. So Roshni ji already has given a nice introduction about me. So that's me. Namaste once again. Namaste, ma'am. Yeah, thank you. Okay. So today we will, so these are the topics we are going to discuss. Today is the first day of our 5 day program. And today it will be most of the, it will be theory and how the thing, how what is thyroid, understanding the thyroid hormones, what are the different disorders of thyroid that we will discuss in today's session. Okay. And then of course, we will also, see what are the different techniques that we can use for our thyroid health. तो ये सारी डिस्कशन आज हम लोग करेंगे. Okay, part 2, thyroid balance. So let's move on. So now before we start, let us first try to understand the endocrine glands. मतलब हरे अपने शरीर में बहुत सारे endocrine glands है. So what are endocrine glands? They are little factories in your body, constantly producing and releasing hormones to keep everything running smoothly. So what are the hormones now? Hormones are like chemical messengers. मतलब जैसे कुरियर रहता है, कुरियर क्या करता है, एक पार्सल दूसरे, एक मैसेज दूसरे को मैसेज दूसरे को पास करता है मैसेज, या फिर आपका व्हाट्सएप इज पासिंग योर मैसेज टू सम अदर पर्सन. So similarly, hormones act as a chemical messengers, and what do? They control growth, metabolism, emotions, reproduction, or even sleep. Okay. So what are different types of endocrine glands we have? You can see over here in this, you have this pituitary gland, you have a thyroid gland, you have an adrenal gland, overseas pancreas again releases insulin to manage blood sugar levels and all. Then ovaries, testes produce estrogen and testosterone to manage reproduction and sexual health. So these are different types of endocrine glands in your body. Okay, and let's today we are going to focus on this tiny little gland, thyroid gland. Abhi, just this is for your information. Like May 25th is considered as Thyroid Day. Even January, the whole month is considered as a thyroid awareness month, right? So now what we are going to do is today understand कि इतना छोटा सा ग्लैंड है, हम लोग क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इसको, उसके लिए पूरा एक महीना दे दिया है, right? So these two programs these are the global programs. May 25th Thyroid Day is a global again awareness program. January Pura month is an awareness program. So these are support. This started actually in 2008, and these are global organizations like American Thyroid Association, European Thyroid Association, Asia Oceania Thyroid Association. All these have come up with these days and these awareness programs. Okay.
एंड वन मोर थिंग इम्पोर्टेंट, ये ना बृहस्पति ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड का संस्कृत नेम क्या है? बृहस्पति ग्रंथि। चलो अब देखते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड होता क्या है। द थायराइड इज अ स्मॉल बटरफ्लाई, तितली के जैसा छोटा सा रहता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गले में, देखिए ये छोटी सी तितली जैसी दिख रही है, राइट? So just below the Adam's apple. अब Adam's apple क्या है? Is the bump or the bulge at the front of your neck formed by thyroid cartilage that protects your voice box. Okay, and it is more prominent in males because their larynx is larger, making the cartilage protrude more. तो आपको एडम्स एप्पल मतलब ज्यादा उसमें दिखेगा, ऐसा नहीं कि फीमेल्स में नहीं होता, बट थायराइड ग्लैंड आपका जस्ट उसके नीचे है। And आप अगर if you touch your throat and swallow, you can feel the Adam's apple moving up and down. कभी किया है आपने? अगर आपने नहीं किया तो you can do it. कभी swallow करके देखो और यहाँ touch करके देखो, you will feel it. Okay. So let's move. So thyroid gland, what it is? Thyroid weighs 15 से 25 ग्राम का रहता है, छोटे सा. It has two lobes, the right and the left two. Okay, and it is connected with a thin tissue called as isthmus. Now it's in front of the windpipe or trachea and is surrounded by blood vessels that provides nutrients and transport hormones. Despite its small size, thyroid plays a vital role in the body. It produces hormones that regulate metabolism. Now, what is metabolism? The process of converting food into energy. Okay, the small gland influences almost every organ. हर एक organ के लिए वो रहता है जिम्मेदार, heart के लिए, stomach के लिए, and also we'll see what it is. Let's move ahead. अब पहले समझ लेते हैं कि how does thyroid gland work. Now imagine like you are working, you are a manager of some big company. Okay, तो आपकी जो company है, there is a CEO sitting in your company, जो who keeps a track of everything in your company that is going on. हर एक डिपार्टमेंट में ध्यान रखता है. सिमिलरली ना आपके घर में कोई दादी माँ रहेगी या आपकी मदर रहेगी या आपकी सास रहेगी, जो आपका घर में पूरा सब ध्यान रखती है कि किसको क्या खाना है, किसको कितना क्वांटिटी करना है. तो वैसे ही अपना बॉडी का भी एक सीईओ रहता है, एंड दैट बॉडी दैट इज हाइपोथैलेमस. Okay, that is your hypothalamus. So the hypothalamus is like your CEO of your body. ना समझ लीजिए अभी आपको अभी जैसे सर्दियां आ रही है तो वेदर गेट्स कोल्डर, योर बॉडी हैज टू अडॉप्ट जस्ट लाइक ना. जैसे आपके लेट्स से अगर घर में कुछ दिवाली जैसा कुछ फंक्शन है, कुछ आपको सोचना है कि क्या क्या जरूरत है ये फंक्शंस की, तो सेम थिंग आपके बॉडी में कि अभी आपको जैसे ठंडी लग रही है तो व्हाट यू हैव टू डू, अभी आपका बॉडी को एडजस्ट करना पड़ेगा उस ठंडी को. तो वो ठंडी को हाउ डज इट मैनेजेस दैट फंक्शन. This is when your thyroid gland really steps in, similar to turn on the heating system to keep your house warm. तो हाइपोथैलेमस नोटिस करता है कि हाँ सर्दियां बढ़ रही है, राइट? तो अभी क्या करना है? तो इट देन जनरेट्स अ मैसेज, अ हार्मोन. अभी हमने देखा हार्मोन क्या है, केमिकल मैसेंजर से. तो अगेन वो हाइपोथैलेमस एक मैसेज जनरेट करेगा और वो मैसेज को क्या नाम देगा? TRH. तो इफ यू सी ओवर हियर देयर इज अ TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन उसको कहते हैं. ओके, so this will be sent to your pituitary gland over here. Now this pituitary gland is like a manager. जैसे आप आपकी कंपनी के मैनेजर हो तो वैसे ही your pituitary gland, that is why it is called as master gland. It is like a manager and that will send a message to the thyroid gland. Now what type of message it will send? In the form of TSH, thyroid stimulating organ, hormone, sorry. So TSH will be generated by pituitary gland to the thyroid gland. अब जाके thyroid gland क्या तीन hormones produce करेगा? That is your T3, T4 and calcitonin. T3, T4 and calcitonin. Okay. Now let's see what happens next. So T3, T4 and calcitonin, T3 and T4 are the main hormones that regulate the energy within our body. ना जैसे आपके घर को कौन चलाता है? इलेक्ट्रिसिटी चलाती है ना, इलेक्ट्रिक पावर रहता है, मशीन रहता है, एंड देन कभी कभी आपके पास बैकअप जनरेटर होता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो क्या होगा. तो देन T3 is like a fuel. T3 actively fuels our metabolism and T4 acts like your backup generator. Okay.
T4 stands by as a reserve, stepping in whenever energy is demanded. Now, what does calcitonin do? Calcitonin, on the other hand, likes the it is like it is basically to control your calcium levels. So calcitonin and PTH, will see it later on in the next slide. They both work and they manage your calcium levels. Okay, let's see over here. Now let's see what are the different thyroid functions. तो क्या क्या थायराइड क्या क्या करता है? पहले तो आपका हार्ट फंक्शन करता है. सो योर थायराइड हेल्प्स रेगुलेट हाउ फास्ट और स्ट्रॉन्ग योर हार्ट बीट. ठीक है, थिंक ऑफ इट जैसे एक इंजन को समझ लो, कार की इंजन को ना. इट डिसाइड्स हाउ मच पावर योर हार्ट, सो थायराइड ग्लैंड इट डिसाइड्स हाउ मच योर पावर योर हार्ट नीड्स टू एट एनी मोमेंट. मतलब समझ लीजिए कि आप अगर सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो आपका हार्ट हमेशा, हैव यू नोटिस, आपका हार्ट इज रनिंग स्मूथली, राइट? या फिर आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ आसन कर रहे हो, तो आपका हार्ट एकदम ज्यादा स्मूथ फास्ट बीट होता है. तो देन इट मैनेजेस योर हार्ट फंक्शन. देन डाइजेशन. डाइजेशन क्या करता है? थायराइड हार्मोन्स प्ले अ की रोल इन ब्रेकिंग डाउन द फूड यू ईट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू योर एनर्जी. जैसे आपने पूरा एकदम भरपेट खाना तो खा लिया, अब वो खाना को एनर्जी में कन्वर्ट करना. योर थायराइड इज लाइक द कुक दैट मेक श्योर द फूड इज ब्रोकन डाउन एंड प्रॉपरली एंड फ्यूल्स योर बॉडी. Then brain development and nervous system. So your brain and nervous system rely on thyroid hormones, especially when you are learning something new or focusing on a task. तो फॉर एग्जाम्पल बच्चों के लिए जब वो लोग पढ़ाई करने बैठते हैं तो पढ़ाई में उनका ध्यान केंद्रित हो, तो who helps? Thyroid gland helps again for the brain development and all. Even as an adult, when you are working on something, when you are focused on something, so who helps you with that focusing? When you're focusing, अभी आप कोई नया डांस स्टेप सीख रहे हो या कोई नया आसन सीख रहे हो, तो जब भी आपको फोकस की जरूरत होती है, तो थायराइड ग्लैंड ensures your brain is sharp and active. Okay. Then muscle contractions, T3 and T4 helps. तो जब भी आप कुछ वजन वाली चीजें उठाते हो, या मसल आर कॉन्ट्रैक्टिंग, राइट? एंड देन यहाँ पे या तो फिर आप चल रहे हो या फिर कुछ दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो अगेन देयर इज अ मसल मूवमेंट. So what does this thyroid do? Thyroid helps smooth muscle movement. So आपका cramping कम हो, right? आपको कभी कभी क्रैम्प्स आ जाते हैं. हैव यू नोटिस दैट कि कभी कभी आप बहुत जोर से एकदम झटके से कुछ उठा लिया तो क्रैम्प आ गया. So now because your muscle movements are smoother. Okay. Next one is kidney clearance rate. So here is your kidney clearance rate and your bone health. So as I told you, calcitonin. Now, before we go to this kidney clearance and all, see, अभी यहाँ पे ये जो thyroid gland का आपको पिक्चर दिख रहा है, this thyroid gland is in the front side. Okay, ये frontal भाग है इसका. लेकिन इसके बैक साइड पे, if you see, this is the back of your thyroid gland. If you notice over here, there are small 4 yellow dots. Can you notice? This dots are basically parathyroid glands, and these glands actually produce parathyroid hormones. Okay, and this calcitonin and parathyroid, they work in coordination to manage your calcium levels. Okay, now calcitonin from the thyroid and parathyroid from the parathyroid glands work as a team to keep your bones healthy. Okay, imagine calcitonin is like a builder who takes extra calcium from the blood and locks it into the bones, making them stronger. Now think of PTH. PTH is a supplier. When your body needs calcium, it releases some from the bones into the bloodstream. So these two again keep on working in coordination. Let's see the next slide. Okay. So now, before we go, अभी तक हमने ये देखा कि थायराइड क्या है, क्या काम करता है ना. Now let us see कि क्या क्या disorders हो सकते हैं थायराइड के. Okay. Now these ये जो हमने classifications इधर दी है, structural and functional and all, these are not rigid classifications. ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही रहेगा, because they can overlap with each other. ठीक है, कभी कोई थायराइड का कुछ डिसऑर्डर हो गया तो फंक्शनैलिटी इंपैक्ट हो रही है, which we will see in right now. So let us see first. अभी अगर आप देखोगे, see, this is your healthy thyroid. ये आपका हेल्दी थायराइड है. बट इफ यू सी दिस goiter, irregular growth of thyroid, आपका थायराइड का जो ग्लैंड है ना वो बड़ा हो जाता है. ओके, so that is your goiter. Then you see thyroid nodules.
दिस इज अगेन दिस पिक्चर इज जस्ट टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या डिसऑर्डर कैसे होंगे, जस्ट टू विजुअलाइज कि हाँ ऐसा होगा, इस तरह से दिख रहा होगा. So if you see thyroid with nodule benching, देखो यहाँ पे छोटा सा लंप दिख रहा है आपको, है ना, थायराइड विथ नॉड्यूल. तो दीज आर थायराइड नॉड्यूल्स, ये स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स हो गए. फिर आपका जैसे ये है थायरोइडाइटिस इन्फ्लेमेशन ना, फुल अगेन थोड़ा सा रेडिश जैसा हो गया है इफ यू सी ओवर हियर. जैसे कभी कभी सर्दी होता है तो आपका नाक कैसा रेड रेड हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है, राइट. तो ऐसे दिस इज योर इन्फ्लेम, योर थायराइड इज इन्फ्लेम्ड ओवर हियर. Then you have this functional disorders. Functional disorders are hypothyroidism. मतलब hypothyroidism में क्या होगा कि आपका जो thyroid gland है, it is producing less number of hormones, T3, T4. It will produce less number of hormones. It is called as underactive thyroid. Hyperthyroidism क्या रहेगा? Overactive. कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है. ओके okay? जैसे एग्जाम आपका कुछ मोटर है, एकदम फास्ट 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 चल रही है, तो आपको क्या होगा, आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है, एकदम फास्ट फास्ट चल रहा है आपका हार्ट बीट. Then you have inflammatory disorders, we have already seen. Then we have over here neoplastic disorders like your thyroid cancer. Okay, thyroid cancer is the biggest risk of having a thyroid disorder. So these were the different thyroid disorders. Now let us concentrate on hypothyroidism. तो हाइपोथायराइडिज्म बहुत ही कॉमन डिजीज है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को होता है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो द स्टैटिस्टिक्स. आई वाज गोइंग थ्रू द इंटरनेट एंड आई सॉ द स्टैटिस्टिक्स. ज्यादातर बहुत सारे लोगों को हाइपोथायराइड ही होता है. ओके, एंड स्पेसिफिकली इट इज इम्पैक्टिंग योर फीमेल्स. ओके, इट्स नॉट दैट इट इज इम्पैक्टिंग मेल्स, बट मोस्टली यू सी द ट्रेंड टुवर्ड्स फीमेल्स. So this is when the thyroid gland, which acts like your body's energy generator, becomes underactive. तो समझ लीजिए कि जैसे आपका फोन का बैटरी सेवर मोड कभी आपने चालू किया है क्या? कभी आपने अगर बैटरी सेवर में रखा है आपका फोन, तो धीरे धीरे चल रहा है, मतलब आपके जो भी अननेसेसरी थिंग्स है वो उसको बाजू में रख दिया, एंड जो काम की चीज है वही चल रहा है, लेकिन एकदम आपका फोन स्लोली स्लोली चल रहा है. तो सिमिलरली हाइपोथायराइडिज्म में भी ऐसा ही होगा. आपका फोन, आपका जो हाइपो अंडर थायराइड ग्लैंड है वो आराम से स्लोली करेगा, एंड द रिजल्ट ऑफ दिस इज व्हाट, इट विल प्रोड्यूस लेस T3 and T4 hormones, which are essential for keeping your metabolism and energy levels running smoothly. Okay, symptoms can range. Now this if you see over your severity level, severity ये mild भी हो सकता है, और अगर आपने care नहीं किया, if you haven't taken care of it, it can again the severity can increase to maximum also. So it can be from mild to a very severe condition. Now when thyroid gland is in producing T3 and T4, the pituitary gland compensates the releasing more TSH. तो जब भी अभी T3 T4 नहीं हो रहा है जनरेट, तो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज भेजता रहेगा, ज्यादा करो, हार्मोन ज्यादा जनरेट करो, हार्मोन ज्यादा जनरेट. तो अगर आप कभी आपका रिपोर्ट देखोगे, थायराइड का रिपोर्ट, तो यू विल सी दैट TSH लेवल वुड बी इंक्रीज्ड over that in that case. Okay, this signals that the thyroid is working hard, which can sometimes lead to swelling in the neck. कभी कभी थायराइड भी है ना, क्योंकि बहुत सारे आ रहे हैं आपको मैसेजेस आ रहे हैं, ज्यादा जनरेट करो, तो इट इज ट्राइंग टू वर्क हार्ड. ओके, एंड बट देन आपका स्वेलिंग भी कभी कभी हो जाता है. गॉइटर की कंडीशन जैसे हमने पहले देखा था, आपका ये थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगा. बट द गुड थिंग इज hypothyroidism can be detected with simple blood test, just like ठीक है. अब T3 T4 TSH का अगर आप ब्लड रिपोर्ट निकालोगे तो आप देख सकते हो, आपका रिपोर्ट यू कैन डिस्कस. नाउ लेट अस सी द सिम्टम्स. क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म के? तो द मोस्ट कॉमन इज वेट गेन. आपका शरीर फूल जाना, स्वेलिंग हो जाना, ठीक, ओवर हियर स्वेलिंग आ जाना. फिर अभी हमने जैसे पहले जस्ट अभी देखा हमने, है ना, मसल कॉन्ट्रेक्शन का काम करते हैं. तो अगर मसल्स आपके काम नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, वीकनेस होगा, right? Joints and muscles might feel stiff and weak because they are not getting the energy they need to slow thyroid function. Cold intolerance, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में भी ना सब लोग आराम से बैठे हैं, लेकिन जिसको थायराइड हो ना उसको ज्यादा ठंडी लगती है.
hypothyroidism. They will be with the blanket and all. Okay, so that is a common, very common symptom. Constipation is again a very one of the common symptom over here. Dry skin हो जाना, you know. इवन आप कितना स्पेसिफिकली सर्दियों में उनको ज्यादा उनकी स्किन ड्राई दिखेगी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट्स को ना। और दूसरे क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो डिप्रेशन में आप जा सकते हो, डिप्रेशन में जा सकते हो। आपका किसी किसी को ये इश्यू होगा कि आपका जो हार्ट रेट है वो स्लोली स्लोली बीट हो रहा है, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हो सकता है। तो दीज आर नो वेरी लेस कॉमन, दिस आर नॉट कॉमन फंक्शन based on your severity, based on your body का structure आपका कैसा है and all. It depends on these symptoms depends or varies. आपके बाल झड़ना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपका बाल झड़ते रहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में। हेडेक हो जाना, नाउ हेडेक भी इट इज sometimes you get this menstrual migraine also in the hypothyroidism. You are affected with menstrual migraine also कि या तो पीरियड के 2-3 दिन पहले, जनरली पीरियड के पीरियड खत्म होने के बाद आपको एक सीवियर माइग्रेन जैसा पेन होगा आपका। So it happens sometimes to some females based on your body structure, based on your severity of hypothyroidism. But these are the symptoms that you see in your hypothyroidism patient. Now let's see what are the causes of it. क्यों होता है ये? तो ये सबसे पहले the most common major reason is the autoimmune disease like Hashimoto's thyroiditis, where your immune system mistakenly attacks the thyroid. Okay. This think like of a security guard रखा है, वो खुद अपने घर पे अटैक कर रहा है. Okay, so think of that. So now why this happens, sometimes surgical removal of thyroid is another cause. Okay, then radiation therapy, to see over here radiation therapy is there. स्पेसिफिकली कैंसर्स के लिए जो रेडिएशन थेरेपी, अगर आपको कोई, भले आपको थायराइड का कैंसर नहीं हुआ बट यू आर इफेक्टेड विद सम अदर कैंसर, बट बिकॉज ऑफ दोज रेडिएशन थिंग्स you can also, your thyroid gland also can impact. Certain medications like even medications आप दवाइयाँ ले रहे हो, स्पेसिफिकली अगर आप थायराइड के लिए कुछ अलग से दवाई ले रहे हो तो उस they can interfere with your how your thyroid works. You may be even you're taking a medicine not for thyroid, you may be taking some medicine for some different purpose, but again due to the overuse of that medications also you can get thyroid and all. Environmental and dietary factors, another big factor is iodine levels, है ना। आयोडीन लेवल्स हम लोग को बचपन से सुना बताते रहते हैं, आयोडीन कम हो गया थायराइड का प्रॉब्लम, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या खाते हैं, आयोडीन वाला नमक खाते हैं, बट ओके लाइक तो दैट आयोडीन आल्सो, बट अगेन इट इज वेरी एसेंशियल आयोडीन को सही मात्रा में लेने का, सही प्रमाण में लेना। अनदर थिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे मैं बता रही थी एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अभी अगर आप देख रहे हो लाइक द कंडीशन स्पेसिफिकली इफ यू आर staying in a very polluted area, like for example if you are staying in a industrial area where there is lot of toxins that are produced that are released in the air, so that can also impact your thyroid conditions. Okay, and then you have this pituitary disease, कुछ अगर रहेगा where there कभी कभी रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड मैनेजर भी बीमार हो गया, है ना। मास्टर ग्लैंड कैन ऑल्सो बीमार पड़ सकता है, तो कम से if pituitary issues are there, then also you will get the hypothyroidism. Okay, let's dive into hyperthyroidism. अभी hyperthyroidism क्या है, ओवर एक्टिव प्रोड्यूसिंग, सब बहुत सारे देखो T3 T4 बहुत सारे T3 T4 T8 सब बना रहे, बहुत सारे बन रहे हैं। So in this condition, the thyroid produces too much T3 and T4, speeding up the body's metabolism like an engine running in overdrive. कभी आप कार को स्पीड में भगा रहे हो, एकदम अननेसेसरी, खाली रोड है फिर भी आप स्पीड पे भगा रहे हो, so that is your hyperthyroidism. So when this happens, people often feel restless, nervous, and overly energetic. फॉर एग्जाम्पल कभी कभी अगर आप बहुत ज्यादा पूरा दिन फटाफट दौड़ दौड़ के भाग भाग के काम कर रहे हो विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, नॉन स्टॉप ब्रेक, तो क्या होगा आपका आपका हार्ट
ज्यादा बीट करने लगेगा, या आपके यू विल योर हैंड्स विल बिकम लिटिल बिट मोर शेकी ओवर हियर, एंड यू कांट रिलैक्स तो कर ही नहीं पा रहे हो आप. Okay, so when TSH levels are low, it signal that thyroid is producing too many hormones. Okay, it can cause physical changes like अभी goiter is again goiter hyperthyroidism में भी होगा आपको, मतलब आपका thyroid enlarge हो गया आपका. Some people might even notice bulging eyes. We'll see it in the next slide. बट अगेन हाइपरथायरॉयडिज्म, जैसे हम लोग थायराइड का T3 T4 TSH कर रहे हैं, वैसे ही यू कैन हैव दिस hyper also. You can have a report that is generated and you can see the detect कि क्या issue है यहाँ पे अपना. Let's explore how hyperthyroidism impacts. तो hyperthyroidism में most common symptoms again क्या क्या होंगे? आपका weight loss होना. तो हाइपो में क्या हो रहा था? वेट गेन हो रहा था. इसमें क्या होगा? वेट लॉस होगा. आप कितना भी खा रहे हो लेकिन आपका वेट कम होता ही जा रहा है आपका. ओके, फिर आपका मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, एंजाइटी बहुत बढ़ जाना, एंजाइटी हो जाना, आपके हैंड्स अगेन शेकी हो जाना, हार्ट बीट रन होना, वेरी क्विकली फास्ट फास्ट रन हो रहा है. वेरी कॉमन, दीज आर द वेरी कॉमन symptoms which you find in hyperthyroidism. ट्रेमर, हाई ब्लड प्रेशर, किसी किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है. स्लीप डिसऑर्डर, कभी कभी रात को नींद नहीं आना, या तो फिर क्या है कि आपको नींद आ रही है लेकिन आप थोड़ा थोड़ा मतलब 1-2 घंटे के बाद आपकी नींद खुल जाना. ओके, बल्जिंग आईज, जैसे मैं बता रही थी, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है हाइपरथायराइडिज्म में. तो समटाइम्स सम पीपल हैव दिस इश्यूज. स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स अगेन, डायरा हो जाना, हेयर थिनिंग, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, ऑल दीज आर योर डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स of your hyperthyroidism. Okay, so what are the causes of this? The causes are Graves disease. One of the major cause is Graves disease. Again, ये this is a autoimmune disease. तो autoimmune disease जैसे हमने पहले क्या बोला था, immune system is attacking the thyroid gland. That is your autoimmune disease. So Graves disease is one of the major this cause for your hyperthyroidism. This is an autoimmune, इसमें क्या होता है? This is an autoimmune condition where the body's own immune system, instead of protecting you, starts pushing the thyroid gland to produce more hormones than needed. Okay, imagine someone constantly, जैसे आप कार चला रहे हो ना, constantly accelerator press कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? आपकी कार ओवर स्पीड हो रही है, राइट? सिमिलरली इन थायराइड में भी क्या हो रहा है? आपका इम्यून सिस्टम पुश कर रहा है, नहीं नहीं और जनरेट करो थायराइड हार्मोन. तो that is your Graves disease or your autoimmune disease. Then your thyroid nodules, we saw that एक छोटा सा lump जैसा है. This is another cause of your hyperthyroidism. Thyroid, it is inflammation. The inflammation of the thyroid, called thyroiditis, can also lead to the release of excess hormones in the bloodstream. It's like a pipe bursting and flooding a room with water supply. Iodine, too much iodine content, right? Then genetic factors also can affect. कभी कभी बचपन से ही you have some genes are there that you are carried, and your thyroid you can have hyperthyroidism. Pregnancy के time पे also there are chances of getting hyperthyroidism, but this is again a temporary. Pregnancy के time पे this is temporary. Okay, and then you have this medications, जैसे हमने पहले भी देखा, medications, overuse of thyroid medicines also can cause you hyperthyroidism. Okay, if you have any questions, you can start putting it in the chat. So whatever questions are there, we will look it into the end. Okay, yeah, if the time permits today, otherwise we'll see it in the next subsequent 4 days. Okay, so these are the different अभी हमने खाली मेन देखा, दो चीजें, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म देखा. उसके अलावा क्या क्या हो सकता है? तो अल्टर वी सॉ थायराइड कैंसर. सी, एक ट्यूमर जनरेट हो जाती है, neck lumps, hoarseness, difficulty swallowing. These are the symptoms. Swollen lymph nodes. Then genetic mutations, radiation exposure, or unknown causes. Cancer, again, we don't know the causes, but these are the considered as some of the causes. तो इसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? थायराइड कैंसर, राइट?
बाकी सब तो माइल्ड है, तो माइल्ड जब है तब आप इसको you can take the treatment, and if you're not taking the treatment then it goes to severity, whereas thyroid cancer is automatically it goes to the most severe stage. Then postpartum thyroiditis, again temporary thyroid dysfunction after childbirth. And then congenital hypothyroidism, underdevelopment or absence from thyroid. Again, this is during the pregnancy. So if not treated, it can go to the severity level. Otherwise, these are the different thyroid conditions over here. Chalo. Now let's see what are the different paths for your thyroid. Path. So first is your food, how you do thyroid health को कैसे मेंटेन करके रखना है. तो खाना कैसे रहेगा आपका, आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, द फोर पिलर्स आहार विहार आचार विचार आपके कैसे रहने चाहिए. एंड देन ऑफ कोर्स योगा इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन ईच थिंग. तो डाइटरी हैबिट्स फॉर थायराइड हेल्थ, आप क्या क्या खा सकते हो, राइट. Apart from, yes, we have mitahar khana, sattvic bhojan is recommended and all, but आप स्पेसिफिक थायराइड के लिए क्या खा सकते हो. तो इंक्लूड आयोडीन रिच फूड्स. आयोडीन रिच फूड्स क्या क्या हो सकते हैं. ड्रमस्टिक्स, नॉट श्योर इफ यू आर अवेयर ऑफ इट. ड्रमस्टिक्स शेंगा की भाजी बोलते हैं ना इधर शायद मराठी में, क्या शेंग रहता है अपना. दैट इज वेरी गुड फॉर एक्सेलेंट नेचुरल आयोडीन सोर्स. Curry leaves hai, that is also good for hypothyroidism. Pumpkin seed, pumpkin is good. Lauki is good again for your iodine consumption. This is lauki is safe for hypo and hyper both. Bananas for hypo. अनार खा सकते हैं. Walnuts and flax seeds. अभी जैसे हमने एक सिम्टम देखा था कि बालों के लिए योर हेयर स्टार्ट्स फॉलिंग एंड ऑल. So in thyroid condition, so flax seeds, right? Nutrition is they recommend us flax seeds, having flax seeds. So that is it provides good fats for thyroid. Okay. Then coconut is good, supports iodine levels and hormone balance. Rock salt. So yes, just now we were talking about iodine wala namak khana, but the natural iodine source better than refined salt is your senda namak khate, rock salt. Okay, that you can have it. Then selenium rich foods, you have to include it. So what are selenium rich foods that you get specifically in India are sweet potatoes. Palak खा सकते हैं. Palak is very good. Again, palak is also iron rich and selenium and iron rich. Then you have carrots, help convert thyroid hormones. फिर आप आंवला खा सकते हो, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स खा सकते हो. हल्दी और अदरक इज वेरी गुड, अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी. इन्फ्लेमेशन आपका थायराइड का थोड़ा कम रख करेगा या मदद करेगा. तो एंटीज आर एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स. पपाया है, जिंजर है, हल्दी है, वो सब. देन यू हैव जिंक रिच फूड. जिंक वाले क्या क्या फूड खा सकते हो आप. अगेन अनार है, ऑरेंजेस है, बादाम है, आलमंड्स है. तो ये सारी चीजें आप खा सकते हो. आयोडीन रिच, सेलेनियम एंड जिंक रिच फूड्स यू कैन ईट इट. Avoid goitrogenous foods. Now, what are goitrogenous foods? So, goitrogenous foods are they have the substances that found in certain foods that can interfere with the normal functioning of the thyroid gland. So, how they affect is they block the iodine uptake. आयोडीन को ब्लॉक कर देते हैं. द थायराइड ग्लैंड नीड्स आयोडीन टू प्रोड्यूस. नाउ वी ऑल नो दैट आयोडीन चाहिए T3 T4 बनाने के लिए. सो गाइट्रोजन्स क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है थायराइड, प्रिवेंट द थायराइड फ्रॉम एब्जॉर्बिंग इनफ आयोडीन, सो लीडिंग टू एनलार्ज थायराइड. तो ये जो एनलार्जमेंट आपका थायराइड का होता है वो इसकी वजह से होता है. तो ये गाइट्रोजनस सब्सटेंसेस नहीं खाने चाहिए. अब क्या नहीं, गाइट्रोजनस किस पे आपको मिलता है, जैसे कि कैबेज है, गोभी, पत्ता गोभी, ये सब सोया फूड्स, वो सब में आपको मिलेगा. तो यू शुड अवॉइड इट. नाउ यू अवॉइड इट मतलब इट्स नॉट दैट कि आप कैबेज बिल्कुल मत खाओ, लेकिन दे से दैट कच्ची चीजें कैबेज, कच्चा कैबेज का सलाद बनता है. यू अवॉइड दैट कच्चा. इंस्टेड ऑफ दैट यू ईट कुक्ड फूड, वेल प्रॉपरली कुक्ड फूड. तो अगर आपकी बहुत सीवियरिटी नहीं है थायराइड की, तो यू कैन हैव अ प्रॉपरली कुक्ड वेजिटेबल्स फूड. Okay, so these you can have it, but in a different way, in a proper way, in a more
cooked way. If you say na burger में cabbage के पत्ते डाल देते हैं, if you have seen that, so try avoiding such कच्चे this. So these are our dietary habits, and most important, very important is stay hydrated with 2-3 liters of water daily. Try कीजिए 2-3 लीटर का पानी रोज हमेशा पिए. Okay, let's go to the next one. Okay, so we have seen the 4 pillars of for healthy lifestyle. क्या क्या है? आहार, विहार, आचार, विचार. तो आहार हमने देखा, healthy food, diet food खा सकते हैं. Say no to toxins, smoking मत करो, alcohol consumption मत करो. Okay, these are your recommended आहार. मीठाहार खाइए, सात्विक भोजन खाइए. Coconut water again, as we saw, it's very good. Okay, then vihara is what? Exercise regularly. हमेशा रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो. कुछ नहीं हो रहा है आपसे तो just go for a 1 hour walk. That is also very important. Okay, so exercise करो, कुछ ना कुछ exercise करो daily. Adequate sleep, आराम से सो. Limit your screen time. मोबाइल आप है ना रात को सोते समय मोबाइल को हाथ में पकड़ के मत सोओ. Replace it with sound sleep. Replace it with something different. What you can replace it with? फिर सोशल सपोर्ट करना. आचार कैसा रहना चाहिए? एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे की बातें सुनना, माइंडफुल कम्युनिकेशन रखना कि मतलब वो क्या आगे वाला क्या कहना चाहता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, एंड सपोर्ट ईच अदर. देन you can have in mindful communication में कि another example I would give is अगर आप फैमिली डिनर में जा रहे हो तो मोबाइल को साइड पे रख के try to concentrate on what other your family members are trying to say. उनको क्या problems face हो रहे हैं. We can try to give some solutions to that. So to have some effective communication. विचारा, stress management, stress को reduce करो and nurture positivity. अभी हाउ विल यू डू दिस थिंग्स? जैसे अभी मैं कह रही थी कि लिमिट योर स्क्रीन टाइम. मोबाइल साइड में रख के आप क्या सोच सकते हो रात को आप यू कैन थिंक ऑफ at least 3 positive things that happen during the day. It could be very simple, small things. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई डू इज, मेरे घर में एक छोटा सा एक गैलरी है. छोटा सा मैंने कुछ पौधे लगाए हैं. तो उसमें मतलब कुछ कभी नई कली आ गई तो दैट यू कैन थिंक व्हेन गोइंग टू बेड. थिंक अरे हाँ आज एक बहुत अच्छी कली आ गई अब मेरे पौधे में. या कोई कोई नया अगर पेड़ लगाया तो नए पत्ते आ गए तो यू फील गुड. तो थिंक अबाउट स्मॉल थिंग्स दैट हैपन ड्यूरिंग द डे. एंड व्हेन यू आर स्लीपिंग थिंक ऑफ ऑल दोस पॉजिटिव थिंग्स. कुछ अच्छा खाना खा लिया है ना, आपकी कुक ने बहुत अच्छा सा आज खाना बना दिया सरप्राइजिंगली, right? So all these small things, and this will change your lifestyle, entire lifestyle. And the moment you change your entire lifestyle, then you will definitely start seeing the changes inside you. Okay. Okay, now let's see yoga, how yoga helps. So yoga हमको सबको पता है balances hormone levels, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन अपना इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है. हम लोग क्या प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं. इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, डिटॉक्सिफाइज द बॉडी एंड बूस्ट मेटाबॉलिज्म, राइट? सो दीज आर द योगा के बेनिफिट्स. लेट्स सी थायराइड के लिए क्या क्या हम लोग को हेल्पफुल रहेगा फॉर अवर थायराइड हेल्थ. षटक्रियास. So these are the practices that can help your thyroid health. Okay, तो क्या षटक्रियास कर सकते हैं? नेति क्रिया कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं आप, और फिर आप इस त्राटक कर सकते हैं, अग्निसात क्रिया कर सकते हैं. ये सारे आपको हेल्प करेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. इट विल इम्पैक्ट योर थायराइड कंडीशन. Let's see Sukshma Vyam, neck rotation, because we are again thyroid gland is situated in your neck. First, we'll do some neck rotations over here. फिर सूर्य नमस्कार is again very beneficial for your entire endocrine system. पूरा सारे के सारे endocrine glands के लिए it is very important. But there is one important thing over here, सूर्य नमस्कार. Hypothyroidism जिसको रहेगा, hypothyroidism because they are feeling lethargy, उनका weakness है. तो you try to have the you can practice dynamic
Surya Namaskar. Okay. But for hyperthyroidism, we have already seen they are overactive. So now they already have a lot of energy. So what you need to do, you need to slow down their process. So when you're for hyperthyroidism, when you're doing Surya Namaskar, they should be practiced slowly and mindfully with inhalation and exhalation. धीरे धीरे स्लो सूर्य नमस्कार कराओ उनको, ठीक है. So this is what about Surya Namaskar. Then you have the other asanas that can help is Marjara asana or cat and cow pose, Simhasana or Siha Garjanasana, which we'll be practicing, stimulates energy flow in the throat region. Okay. Padasthana asana, hand to foot pose. Ustrasana again is very good. आपका बैक को तो टोन करेगा ही, but it is also helpful because you are stretching your neck again. So Ustrasana is very good. Okay, now there is one contraindication with this. Individuals with an enlarged thyroid should practice with caution. जिसको thyroid है ना पूरा enlarge हो गया, goiter जैसी condition हो गई है, so that is something very important in this. Matsya asana again, it regulates the function of thyroid gland and stimulates the thymus gland, boosting the immune system. Bhujanga asana is very good. अगेन भुजंगासन हाइपरथायरॉयडिज्म जिनको है तो दे शुड बी वेरी केयरफुल. ऊपर देखने की जगह पर दे कैन लुक इन द फॉरवर्ड ओनली दिस, so they have to be very careful when they are doing bhujangasana. Then setu bandhasana is good. Dhanurasana again the same thing for hyperthyroidism. Setu bandhasana, then viparit karni asana. So there are these are the different viparit karni variations. Sarvangasana कर सकते हैं, विपरीत करने मुद्रा कर सकते हैं, हलासन. These are very good for your thyroid. And then shavasana is the best. It is for relaxation, right? Indirectly supporting. जैसे ही आपको relax होना start हो जाओगे, ऐसे ही आपका thyroid function, आपका endocrine system will function normally. These are the different mudras that you can perform, like T mudra. T mudra or your hand gestures will see it. Brahma mudra. Again, this is Brahma mudra is also a neck rotation, but there is just a slight variation to our neck movement which we do. So we'll see that. Chin mudra, this is also good. Then Khechri mudra is again very good. Activates Vishuddhi chakra, supporting thyroid function. Now, if you are aware of the different chakras of our body, Muladhara chakra and all, so there is your Vishuddhi chakra that resides on your throat region. Okay, so this Khechri mudra is again very helpful for your activates Vishuddhi chakra. Now, Vishuddhi chakra actually is responsible for all your throat related disorders. अभी throat related disorders में cough and all भी आता है and thyroid भी आता है. So this Vishuddhi chakra is very it controls all your throat related disorders. And Jalandhar Bandh, Jalandhar Bandh is very good again for thyroid. Then your Udyan Bandh is there. Indirectly it supports. Pranayam again, section, yogic deep breathing, Anulom Vilom, Nadi Shodhan. Primary Pranayam, Ujjayi Pranayam is very good again for your this thyroid conditions. Shitli Pranayam and Shitkari Pranayam. See now meditation, as I was talking about Vishuddhi Chakra meditation. Directly stimulates the thyroid gland, enhancing its regulation and promoting hormonal balances. So thyroid में the symptoms that we were seeing, कभी कभी जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्लैरिटी नहीं रहती है, कम्युनिकेशन भी आपका खराब हो जाता है, लाइक यू फील क्या बोलते हैं उसको, यू फील कि आपको मोटिवेशन आपके इसमें कुछ रहता नहीं है, यू फील लिटिल डिप्रेस कि क्या जरूरत है, कुछ नहीं करना है ऑल्सो, एंड देन योर कम्युनिकेशन ऑल्सो इफेक्टेड with this. So all this Vishuddhi Chakra, Yoga Nidra is this fantastic meditation technique because the moment you start, आपका stress जैसे जैसे reduce होगा, the moment your stress reduces, कि जैसे मैंने पहले ही कहा था, सबसे पहले क्या कहा था, हाइपोथैलेमस आपका ब्रेन में सीईओ है, तो वो सीईओ आपका स्ट्रेसफुल नहीं, स्ट्रेसलेस रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा उसको, तो क्या होगा,
it will function in a more proper way. And the moment you reduce the stress, the everything starts balancing in its own way. So Yog Nidra is very good for that. Mindful meditation, pranam and soham jap, and all those things. So this is a 4-day program that is planned. We will do it every day. Day 1 में ये सब करेंगे, day 2 में ये करेंगे, day 3 में we'll also have Pratak, and day 4 में we'll have Vishuddhi Chakra meditation. So all this is just a glimpse of the next selected practices for the next 4 days. Okay. So this was from me. What else? Any questions? Anyone has any questions? Let me just quickly check the chat window. Can you ask? Yeah, hello. Yes, ma'am. हाँ, क्या क्वेश्चन था कुछ? हाँ बोलिए, वंदना हाँ, जी। कि आप सर्वांगासन के समय पर ना आपने कुछ कहा था कि हाइपो वाले कुछ मतलब इट इज बेटर फॉर देम या हाइपर कुछ मेंशन किया, इट वाज नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली. ओके ओके, तो सर्वांगासन इज गुड फॉर बोथ एंटायर थायराइड. हाइपो भी करेंगे, हाइपर भी कर सकते हैं, लेकिन हर चीज के लिए ना हाइपर वाले के लिए स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा केयर हमेशा रखना पड़ता है, क्योंकि हाइपर वाले एक तो ओवर एक्टिव रहते हैं, तो ज्यादा स्टिमुलेट ना हो जाए, मतलब तो दैट हाइपर विल हैव टू टेक अ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन फॉर दिस. ओके, That asana should be done very slowly. The movement or the slowly. awareness should be on Yes, 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 yes. एकदम you should be very slow with hyperthyroidism. Yes. Okay, ma'am. Thanks. हाँ जी, सीमा जी, I think you have raised your hand. सीमा Kade, yes. Renu ji, actually na, sometime it is seen ki cholesterol level is also increased with thyroid, means hyper or hypo. What is the reason behind it actually? See, cholesterol. Many cases. हाँ, तो इफ यू रिमेम्बर, हाँ हम लोग ने पहले ही देखा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में. तो हर एक वन एंडोक्राइन ग्लैंड इज इम्पैक्टिंग अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड. लाइक फॉर एग्जांपल ना, आई हैव वन पर्सन नोन हु हैज हाइपोथायराइडिज्म, लेकिन उसको डायबिटीज भी हो गया, इंसुलिन भी हो गया, बिकॉज was not functioning properly, diabetes हो गया. So these all things na, they work in coordination with each other, and that is why cholesterol also gets fluctuated because of all these conditions. Okay, okay, okay. Thank you, ma'am. Yeah, welcome. Yes, Shukla ji, बोलिए सर, आपके कुछ क्वेश्चन थे? नमस्ते मैडम. हाँ, नमस्ते फर्स्ट तो सर. मैंने जैसा बताया था ना कि वो शेयरिंग के लिए जो इतनी इंफॉर्मेशन आपने अवेलेबल इंफॉर्मेशन दी है वो शेयर करने के लिए, जिससे क्योंकि whenever we will get the time we will at least try to revise it. सेकंड मैडम, जैसे कि आपने बताया हमारी ये स्पेशल क्लास है थायराइड के लिए, और इसमें जैसे आपने एक मैंने पूरे लेक्चर में ये नोट किया जैसे कि क्या है कि रॉ कैबेज नहीं खाना चाहिए. तो ऐसे ही कंट्रा जो है ना, देखिए हम लोग कोई भी जब योग आसन प्राणायाम करते हैं तो पहले कंट्रा बताते हैं जो है कंट्राइंडिकेशन, जिससे कि फिर उसके बाद बेटर हो. तो इसको जरा एक आप और समअप करके हाईलाइट कर देंगे कि हाँ भाई जिनको थायराइड है वो ये चीज नहीं खानी है, जिससे क्या है कि वो 20% तो बेनिफिट हो जाएगा, फिर उसके बाद तो जो अदर थिंग्स हैं बहुत बेटर हैं. टोटली वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, वेरी नाइसली यू हैव प्रिपेयर्ड स्लाइड्स, एंड अभी आप 1 year बिफोर की रेनू मैडम नहीं है. Thank you so much. You have developed too much. Thank you very much. Yes. So Nice to see in you for. Thank you so much. तो अभी आपका जो क्वेश्चन था ना खाने पीने के बारे में, देखिए मैं खाने दीज आर द जनरल रिकमेंडेशंस. ओके, अभी अगर मैं बोलूंगी कि कैबेज नहीं खाना है तो सबसे पहले मैं इवन आई माई सेल्फ टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम ऑल्सो हाइपोथायराइड पेशेंट. ओके, तो सबसे पहले मेरे को डॉक्टर ने क्या बोला, कैबेज बंद कर दो खाना, दैट्स इट. तो ये स्टैंडर्ड बता देते डॉक्टर कि कैबेज खाना बंद कर दो, लेकिन क्यों नहीं खाना है या कितना क्वांटिटी में खाना है या उसको कैसे खाना है, दैट न्यूट्रिशन कैन गाइड यू मोर बेटर वे. So when I went to nutritionist, that time she explained what is why you should not eat cabbage, और कच्चा नहीं खाने का, इसको पका के प्रॉपरली खाने का. इंडियन फूड्स ज्यादातर हमेशा पके हुए रहते हैं, कुछ भी हो, भले आप वेज खा रहे हो नॉन वेज खा रहे हो, दे आर मोर हम लोग पका के प्रॉपरली पका के खाते हैं. जबकि आई हैड विजिटेड
इंटरनेशनली ऑल्सो, तो वहां पे ज्यादातर फूड कच्चा ही रहता है, मतलब दे ईट रॉ थिंग्स, कुछ भी खा लेते. तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज your body, your nutrition will guide you properly based on your body structures and all. जैसे when I had gone to nutrition, they had actually मुझे पूरा रिपोर्ट बना के दिया कि आप क्या क्या खा सकते हो, कितना नहीं खा सकते हो, कितना लेवल का खा सकते हो. वो पूरा उसने पूरा बॉडी मतलब मेरा स्कैन किया. दे हैड सम स्वैब test, some DNA test they had done it. I don't remember the name of the report right now, but they had उन्होंने पूरा scan किया, and then because my I have some other conditions like मतलब मेरा blood is what group it falls into, all those things that had mattered, and then they gave me a plan. जैसे मुझे बोला कि छाछ पीनी चाहिए ना, छाछ buttermilk you put on, specifically she emphasized on कि जीरा डाल के पियो आप, धनिया जीरा का पाउडर रहता है ना, वो ऐसा डाल के पियो. तो ऑल दिस थिंग्स, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, योर न्यूट्रिशन विल बी एबल टू गाइड यू मोर. तो ये सब जेनरिक बोल देते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए. सब लोग बोल देते हैं आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, राइट. लेकिन आपको अगर सेंधा नमक ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, ज्यादा यूजफुल रहेगा. तो ऑल दिस things you can consult with your nutrition and they can guide you in a more proper way based on your health, based on your body and all. Okay. Yeah. Yes. Any other question? No, Renuka ma'am, it was a wonderful session, very nicely presented. Thank you. The only thing is, अगर कल आज तो टाइम नहीं परमिट, अगर कल टाइम परमिट हुआ तो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन फर्स्ट 10 minutes, 5 minutes because I joined late, so but Okay. rest of the thing was wonderful, like a new insight and very nicely presented. Thank you so much. Thank you. काफी Sorry. मिसकंसेप्ट जो थे वो काफी क्लियर हो गए हम लोगों के. हाँ. Thank you so much. See, what you can do now, I don't know what is your name. Sorry, I missed your name. मुनाली. मनाली. ओके. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट ना कि रिकॉर्डिंग रहेगी, क्योंकि कल हम लोग का प्रैक्टिकल का भी सेशन है. तो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वी विल ट्राई टू आंसर दैट, बट अदरवाइज आई विल रिपीट इट इन द एंड आफ्टर द टाइम परमिट्स. अदरवाइज यू कैन कम अप विद सम ऑफ योर क्वेश्चंस एंड आई ट्राई टू आंसर दैट. Will that work, Manali? Can we get the recording of this session or the PPT? We might get the recording. As I understand, we will be getting the recording of it. Okay. Thank you so Okay. much. That answers your question? Yes, perfect. Okay. Thank you so much. मैम, लाइक लाइफस्टाइल के बारे में तो आपने बहुत कुछ कहा हुआ है. तो अभी जैसे बचपन में मैंने बहुत सुना और देखा भी गॉइटर के बारे में. एज आप बोल रहे थे तो मैं थोड़ा कनेक्ट कर पाई. Nowadays we don't find those cases much, but hypo and hyper जैसे घर घर में लाइक डायबिटीज हर किसी को हो जा रहा है. तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप और स्ट्रेस, हर चीज वही कनेक्ट होता है. यस. तो मतलब मेरा ये पर्सनल, जैसे अभी मैं बता रही थी, इवन आई एम अ हाइपोथायराइड पेशेंट. तो लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग. मुझे मतलब 10 साल से है और मुझे मतलब डॉक्टर ने दे दिया. हाँ, अच्छा. अब मुझे नहीं पता था. आई वाज नॉट अवेयर ऑफ कि मेरा गला थोड़ा फूल गया है नॉट, बट माय फ्रेंड्स यूज्ड टू कम एंड से तेरा थोड़ा गला फूल गया है, क्या प्रॉब्लम है. तो देन आई विजिटेड डॉक्टर. तब तक मैं इवन आई वाजंट अवेयर ऑफ इट. एंड मुझे ऐसा कुछ स्ट्रेस जैसा लग भी नहीं रहा था, बट आई डोंट नो कहाँ से वो स्ट्रेस हो रहा था. नो आइडिया फॉर दैट. बट देन now with the help of yoga, and specifically in last 6 months when I came into yoga. So when I came into yoga and now I understood, so this stress relieving thing na, jaise meditation hai, specifically yoga nidra and all, when I started doing all these activities and all practices and all, that time now my thyroid ka jo thyroid की गोली रहती है 25 ग्राम से वो बहुत बढ़ जाती है. they keep on increasing that mg, right? 25 मिलीग्राम से फिर 50 मिलीग्राम, 75 और. तो अभी मेरी तो एकदम काफी बढ़ गई थी और मुझे पता भी नहीं चल रहा था ये क्यों बढ़ रही है. बट नाउ अब मेरा धीरे धीरे इतना कम हो गया आफ्टर कमिंग टू थायराइड कि मतलब अगर मेरा 150 का था तो अब मेरे को खाली 88 की मेडिसिन दे रही है. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट टू कीप ऑन गोइंग मोर स्लो एंड स्लो, little and more, थोड़ा कम tablet लूंगा. So these all things definitely, it's my personal experience that how yoga is helping me personally. Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yes, welcome. Yeah, sir. Anyone else? Any health questions? Renu ji, Seema here.
Yes, A Lina, please. wonderful session, Renuji. I just couldn't stop myself to unmute and appreciate the way you have Thank presented. you so much. Wonderful. And Thank it you. clarified a lot of doubts that I also had in my mind. Thank you so much. Welcome. Okay, so एक one request for everyone. आज हमने देखा feedback loop. Feedback is important. Even our organs also give feedback. तो आप लोग भी feedback दे दीजिए. Link is already there in the chat window. So आप लोग chat give your feedback and try to join from tomorrow on the mat. Okay. And general guidelines you are all aware of. कि भाई खाना 2 घंटे पहले खा लो. Mat पे आ जाओ. So these are the general guidelines that you need to follow when practicing yoga. Okay. Thank you. Thank you so much, ma'am. Session, Thank you. Renu. Thank you, Thank you Renu. so much. Nice session. Thank you. Thank you everyone. बहुत अच्छा था. Thank you. We'll चलो बंद करें हम लोग सेशन को. Yes, Bye ma'am. bye. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, Shukla teacher. Chat window is available during class only. तो अगर किसी को feedback link के ऊपर they can just click and keep it. They can fill it later on. That is okay. And आपको रोज ही मिलेगा feedback link. Okay. So I'll just keep the session open for 2 more minutes. So while you can click on the feedback link. Otherwise we can all drop. Thank you. नहीं मैडम, मेरा हाँ, बोलिए सजेशन था ना, जैसे कि एक ऐसा जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए अपने जितने क्लास वाले हैं जो थायराइड सेशन अटेंड कर रहे हैं, उसमें आप हाँ. डाल देंगे तो जिसको जब मौका मिलेगा तब वो फीडबैक और रजिस्ट्रेशन वाला दोनों कंप्लीट कर लेगा. हाँ, शुक्ला सर, this हो जाना है. हाँ, हाँ, शुक्ला सर, this is an open क्योंकि जैसा हम लोग पहले करते थे कि अपना हाँ. So this is actually ना free yoga camp, yoga है ना, free yoga camp है ना. So this entire thing is managed by Aarambh Yoga Institute. तो शायद अपने को वो group बनाना मुश्किल हो जाएगा, WhatsApp group, because we don't know ना. Sometimes some other people can also join in on day 2, day 3 and all. And this is a very short camp, only for 5 days. तो WhatsApp ग्रुप नहीं रहेगा. तो आप क्या कर सकते हो, ये लिंक जो चैट विंडो में है उसको पे क्लिक करके आप रख दो. And whenever you get chance, you can do it. Okay? ओके, थैंक यू. Okay. Welcome. Bye bye.